Welcome on board the Newstrack. I'm Rahul. Kanwal. We're just hours away from the first phase of polling in West Bengal. And the electioneering is now getting downright dirty. Lots of personal below the belt or below the leg comments now being exchanged between the political parties out in the battlefield. Ugly eruption right before the vote. Mamata's injured leg takes center stage. BJP's Bengal chief launches an ugly provocation. শাড়ি পরে আছেন একটা পা ঢাকা একটা খোলা এরকম শাড়ি পরতে দেখিনি যদি পাটা বার করে রাখবেন শাড়ি কেন বারমুড়া পরতে পারেন Didi dons Durga avatar to hit right back. সালোয়ার কামিজ পরবে না শাড়ি পরবে না ওরা হাফ প্যান্টুল পরিয়ে দেবে Didi's forces label BJP Neta a depraved, perverted monkey. Bermudas versus Bandar. The big fight on Newstrack. 24 hours before West Bengal goes to polls, an ugly war of words has erupted between the BJP state president and the state's chief minister. This after Dilip Ghosh asked Mamata Banerjee to replace her saree with a Bermuda so that her foot injury is more clearly visible. Mamata Banerjee has hit back hard, accusing the BJP of policing women's choices. Here's how this big political fight is playing itself out. plaster কাটা হয়ে গেল crepe bandage মারা হয়ে গেছে আর পা তুলে তুলে সবাইকে দেখাচ্ছেন শাড়ি পরে আছেন একটা পা ঢাকা একটা খোলা এরকম শাড়ি পরতে দেখিনি যদি পাটা বার করে রাখবেন শাড়ি কেন বারমুড়া পরতে পারেন তাহলে পরিষ্কার দেখা যায় BJP's Bengal chief doesn't think it's okay for Mamata Banerjee to be wearing a sari while she's injured. He wants her to wear Bermudas instead, a taunt that has received a sharp response from the West Bengal chief minister. শাড়ি পরে আছেন একটা পা ঢাকা একটা খোলা এরকম শাড়ি পরতে দেখিনি যদি পাটা বার করে রাখবেন শাড়ি কেন বারমুড়া পরতে পারেন তাহলে পরিষ্কার দেখা যায় সালোয়ার কামিজ পরবে না শাড়ি পরবে না ওরা হাফ প্যান্টুল পরিয়ে দেবে আর ভোট চাইবে ওদের বলুন যাও অনেক হয়েছে কে কি পড়বে না পড়বে এটা নিজস্ব চয়েস As an angry Mamata hit back, accusing the BJP of dictating a woman's choice of clothes, women netas of the TMC too gunned for Ghosh. MP Mahua Moitra called the BJP Bengal president a perverted, depraved monkey. Another MP, Kakoli Ghosh Dastidar, slammed Ghosh for spitting venom and crossing all limits. एक्चुअली दिलीप घोष जो कल्चर में है ही कल्चर से पड़े हुए हैं नागपुर में वहाँ का हाफ पैंट का ही बारमूडा का ही वह तरीका है शायद उनको ऐसा लड़की लोग को पैर देखने में अच्छा लगता है ये हो सकता है ये तो इट इज़ अ पार्टी ऑफ ऑल साइकियाट्री पेशेंट्स इस तरीके की भाषा इस्तेमाल करना फिर से इनकी महिला भारतीय जनता पार्टी की महिला विरोधी सोच दिखाता है उनका मानसिक दिवालियापन दिखा रहा है क्योंकि उनको हार नजदीक दिखाई दे रही है The outrage and the political attacks, however, have not deterred Dilip Ghosh, who is now imparting Mamata Banerjee lessons in morality and decency. মমতা ব্যানার্জি আমাদের মুখ্যমন্ত্রী একজন মহিলা আমরা তার কাছ থেকে এরকম সাইলেন্টতা আশা করব যেটা বাংলার সংস্কৃতির পরিচায়ক হবে একজন মহিলা শাড়ি পরেছেন কিন্তু পা বার করে বারবার দেখাচ্ছেন এটা সাইলেন্টতাই নয় আমি এর প্রতিবাদ করেছি The TMC, appalled by Ghosh's clarification, said that Bengal will punish this misogyny and women, whether in saris or ripped jeans, will not forgive this. The Trinamool aims to mobilize voters' support, highlighting Mamata's injury and blaming it on the BJP. Now, Dilip Ghosh's wear Bermuda jibe at Mamata may offer it another opportunity to paint Didi as a woman wronged and mocked by the BJP. Bureau Report, India Today. The BJP state unit chief in West Bengal finding himself in the crosshairs of the Trinamool's attack. I want to go across straight to the man who many in the Bharatiya Janata Party and the Sangh Parivar believe could be the state's next chief minister if the Bharatiya Janata Party comes to power. Dilip Ghosh now joins us live and exclusive from Jungle Mahal where he's been campaigning. Dilip Ghosh ji, स्वागत है आपका इंडिया टुडे की न्यूज़ ट्रैक पे। मैं तमाम सवाल पूछूं उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप ही हमारे दर्शकों को बताएं
कि ममता बनर्जी की साड़ी, ममता बनर्जी की लेग्स और ये जो बर्मुडा की आपने बात की, आपने किस परिप्रेक्ष्य में आपने ये बात रखी? आपके हिसाब से क्यों आप चाहते हैं कि ममता बनर्जी साड़ी छोड़ के बर्मुडा पहन लें? देखिए, इस मामले में बहुत चर्चा हो चुकी है और काफी दिनों से हो रही है और इसमें ये कोई पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है। जिन्होंने पॉलिटिक्स से हार करके दूसरे तरफ मुद्दा को खींच रहे हैं, उसी पर चर्चा हुआ है। मुझे लग रहा है कि आप विकास ही मुद्दा होना चाहिए। बंगाल के लोग विकास से बहुत दिन से वंचित है, सालों से, और लोकतंत्र से वंचित है। इन दोनों चर्चा के विषय होने चाहिए। हम भी इसी को मुद्दा बनाए हैं और इसलिए इस पर ही समय लगाया जाए, बर्बाद किया जाए। नहीं, वो बात तो सही है, लेकिन आप ही का बयान है, इसीलिए आप ही से पूछ रहे हैं उसके बारे में। आप अगर विकास की बात करते तो उसी पे फोकस होता। आपने, मैं चाहता हूं कि आप ही पहले दर्शकों को समझाएं कि आपने जो कहा, आपने क्यों कहा, क्या सोच के कहा कि अगर वो साड़ी की जगह बर्मुडा पहने और अपनी टांग को दिखाना चाहती हैं तो वो बेहतर होगा, फिर ही टांग ठीक से नजर आएगी। आपने इस तरह की बात स्टेट के चीफ मिनिस्टर के बारे में क्यों कही सर? एक महिला के साथ हम जिस शालीनता से पेश आते हैं, एक खैर टूटा दुख की बात है, हम लोगों ने सब बोला जल्दी ठीक हो जाए, चिकित्सा होना चाहिए, लेकिन हर सभा में टैंग उठा करके लोगों के साथ बात करना, साड़ी पहने हुए व्यक्ति, तो ये हमारे माता बहनों के साथ जिस प्रकार से हम परिचित नहीं है। मैं कहा ये बंगाली संस्कृति नहीं है और इसीलिए ये ठीक नहीं है, इसका मैंने प्रतिवाद किया और इसलिए इसके ऊपर चर्चा ज्यादा करने की कोई जरूरत नहीं है। और आज भी एक बार उन्होंने इस प्रकार कमेंट किया, जो मैंने भी ट्वीट किया, देखिए आप भाषा सुनिए उनका, और इस प्रकार की अशालीन शब्द प्रयोग कर रहे हैं। अगर महिला है इसलिए उसके प्रतिवाद कोई नहीं करेगा। मुझे लगता है ये लोकतंत्र ऐसा नहीं हो सकता। एक तरफा कोई पिछड़ा जाति का है, कोई संख्यालघु है, कोई महिला है, इससे कुछ भी बोलने करने का अधिकार है, मैं ऐसा नहीं मानता। ममता बनर्जी खुद जो तृणमूल की महिला नेता हैं वो, और साथ ही साथ कई सारी महिलाएं जो देख रही हैं, उनको ये लगता है कि बीजेपी के स्टेट यूनिट चीफ के तौर पे, पश्चिम बंगाल के संभवतः अगले मुख्यमंत्री के तौर पे, क्या आपको इस तरह का बयान देना चाहिए था जहां पे आप किसी पर इस तरह का इलेक्शन कैंपेन में फर्स्ट फेज स्टार्ट होने से पहले इतना पर्सनल अटैक एक तरीके से कर रहे हैं? एक महिला के रूप में इस प्रकार दृश्य प्रस्तुत करना, बार बार टैंक दिखाना और बोलते हैं कि मोदी का कोई चेहरा देखना नहीं चाहते हैं, तो आपका चेहरा कौन दिखाना चाहता है? आपका टैंक क्यों दिखा रहे हैं? तो ये बोलने का मुझे अधिकार है। शालीनता किसी एक तरफ से नहीं होता। जो लोग हमको शालीनता सिखाते हैं उनको भी ये सोचना चाहिए, मुख्यमंत्री को इस प्रकार शोभा देता है क्या? मैं ये प्रश्न करता हूँ, इसमें मैं समय बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ। आपको कोई और दूसरा प्रश्न पूछना तो पूछिए। अच्छा, ये बताएं कि फर्स्ट फेज स्टार्ट होने से पहले अभी आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है? क्योंकि जहां पर चुनाव होने वाला है बहुत हद तक वही तय करेगा कि आगे 8 फेजेस में क्या होगा। इसलिए कैसे क्रिकेट में होता है कि एक गुड स्टार्ट बहुत ज़रूरी है बीजेपी और तृणमूल दोनों के लिए। तो अभी आप कैंपेनिंग कर रहे हैं, जगल महल में, पूरे राज्य में आप घूम रहे हैं, स्टेट यूनिट चीफ हैं आप, कितना कॉन्फिडेंस है अभी आपको? देखिए, हम पूरा कॉन्फिडेंस के साथ उतरे हैं चुनाव में और इतना कॉन्फिडेंस है कि हमारे गृह मंत्री जी ने जो किया कि 200 सीट के साथ सरकार बनाना है, और बोलते ही हमारे लाखों कार्यकर्ता कूद गए और पूरा जी जान लगाए और साल तक हमारी राजनीतिक हत्या हुई है मंडल प्रेसिडेंट की। इस परिस्थिति में हम काम कर रहे हैं और जिस क्षेत्र में पहला स्टेज में चुनाव हो रहा है वहाँ हम जीत चुके हैं, जंगल माहौल और आसपास, और 1-2 सीट पार्लियामेंट में हारे तो थोड़ी बहुत वोट से हारे हैं। इसलिए हमारी ये क्षेत्र है जो पंचायत चुनाव में हम जीते हैं, पार्लियामेंट में जीते हैं और असेंबली में हम जीते हैं। पहला और दूसरा फेज धमाके से जीतेंगे। मुझे लगता है कि ज्यादा से ज्यादा 10% सीट ममता बनर्जी जीत सकती है। ये जो ममता बनर्जी को चोट आई जब वो रोड शो कर रही थी, उनकी टांग चोटिल हुई, उसके बाद वो व्हीलचेयर में बैठ के कैंपेनिंग कर रही हैं, टीएमसी कहीं ना कहीं उम्मीद कर रही है कि इससे ममता बनर्जी बंगाल की बेटी के तौर पे सिंपैथी पाएंगी, लोगों से सहानुभूति जुड़ेगी लोगों की उनके साथ। नहीं, सहानुभूति उन पर होता है जो तकलीफ करते हैं, सेक्रीफाइस करते हैं, लोगों के लिए कुछ करते हैं। 10 साल लोगों ने उनको मौका दिया। आज बंगाल के नौजवान नौकरी के लिए पश्चिम भारत में भाग रहे हैं, चिकित्सा के लिए भी चेन्नई, मुंबई, बेलोर जा रहे हैं, शिक्षा के लिए बेंगलोर जा रहे हैं, और महिलाओं की जो सुरक्षा वो एकदम हथिये पर आ गया है। ममता बनर्जी बोलती है कोई महिला के ऊपर बलात्कार हुआ तो उसका कंप्लेन भी खाना नहीं लिया जाता है और उनकी चरित्र पर उंगली उठाती ममता बनर्जी एक महिला होकर के इस प्रकार बातें करते हैं। इसलिए उनसे कोई उम्मीद नहीं है, इसलिए कोई सिंपैथी नहीं है। लोग बदलाव चाहते हैं,
नया बंगाल चाहते हैं और मोदी का हाथ में बंगाल सौंपना चाहते हैं। एक बड़ा फैक्टर जो बीजेपी के लिए बना, वो सारे जो टीएमसी छोड़ के लोग आए, उनको लेके जो आरएसएस और बीजेपी के पुराने कार्यकर्ता हैं वो थोड़े नाराज थे। आप एक तरीके से ओल्ड बीजेपी को रिफ्लेक्ट करते हैं। कई सारे जो नए लोग आए उन्हें कहा जाता है कि ये दल बदलू हैं, टर्न कोट से अभी नए जुड़े हैं, उनसे जो पुराना धड़ा है बीजेपी का उन्हें पसंद नहीं करता। किस हद तक अभी भी फेज 1 से पहले ये भावना है? किस हद तक आपके लिए एक चैलेंज रहेगा कि जो पुराना बीजेपी है, जो ओरिजिनल बीजेपी है वेस्ट बंगाल का, उसे ये ना लगे कि बाहर से लोग आके अब हमारे सर पे बैठ गए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक रणनीति के तहत आगे बढ़ रही है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग परिस्थिति में हम चुनाव लड़ा और जीता है, और इतना बड़ा विस्तार, इतना बड़ा उसका कभी नहीं हुआ था देश में हमारी। इतने राज्यों में सत्ता में आना, केंद्र में इतनी मेजोरिटी के साथ आना, तो माननीय अमित भाई का जो विजन था उस आधार पर हमने आगे बढ़ा। पिछले 7 साल से पार्टी को नेतृत्व किया है, और उन्होंने जो प्रयोग किया उसमें जो रिजल्ट आया उस आधार पर हम आगे बढ़ रहे हैं। जब पार्टी अचानक बढ़ती है, जैसे बंगाल में इस बार हुआ है, तो उसमें थोड़ी सी इस प्रकार परिस्थिति बनती है, काफी लोग बाहर से आ जाते हैं, तो नए पुराने में एडजस्ट करने में थोड़ा समय लगता है। लेकिन हम जानते हैं कि हमको यहाँ चुनाव जीतना है, इस परिस्थिति को पार करके आगे जाना है। और पंचायत से लेकर उसके पहले से लेकर काफी लोग आए, पार्लियामेंट चुनाव में भी ऐसे लोग हैं जिससे पार्टी से आए, कांग्रेस, सीपीएम, टीएमसी के हमने जिक्र किया, आज वो एमपी बनकर दिल्ली में पहुंचे हैं। तो इसलिए हमारे जो कार्यकर्ता जिनको थोड़ा सा असहज महसूस हो रहा था, उनको भी लग रहा है कि ये बात सही है कि हमारे पास उस तरह के कार्यकर्ता कम है तो चुनाव जीत सके, उतना पॉपुलर फेस कम है कि जिसको भी हम चुनाव में उतार दें और जीत जाए। इसलिए हमको कुछ लोगों को लेना पड़ा जिन्होंने काफी साल से राजनीति कर रहे हैं। हो सकता है हमारे उल्टा तरफ खड़े होकर राजनीति कर रहे थे, आज हमारे झंडा के नीचे आकर भारत माता की जय नारा लगा रहे हैं। हमारे कार्य पद्धति, हमारे विचारधारा को समझते हुए आए हैं, और धीरे धीरे वो एडजस्ट भी हो जाएंगे। इसलिए थोड़ी सी पहले समस्या थी, लेकिन हमारे समझदार कार्यकर्ता जो राष्ट्र के लिए, समाज के लिए राजनीति करते हैं, इसको एडजस्ट करके आगे बढ़े हैं। पहले 2 फेज के चुनाव लगभग प्रचार समाप्त होने जा रहा है। देखिए, वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, और सारे कार्यकर्ता पूरा जोर से लगे हैं। धीरे धीरे पूरा बंगाल में ऐसा ही वातावरण बनेगा, क्योंकि जीत रहे हैं, ये कॉन्फिडेंस हमारे कार्यकर्ताओं में है। एक दूसरा बयान बीजेपी ने वायरल किया पश्चिम बंगाल में। टीएमसी के नेता हैं शेख आलम, वो बासापाड़ा, नानूर, बीरभूम कंस्टिट्यूंसी में भाषण दे रहे थे। कह रहे थे कि अगर 30% मुस्लिम इकट्ठा हो जाए तो 4 पाकिस्तान बन सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इस तरह के आपत्तिजनक बयान तृणमूल के नेताओं की तरफ से भी आ रहे हैं। देखिए, ममता बनर्जी की जो राजनीति चली है 30-90 की, तो देश विभाजन के पहले देश में ऐसा राजनीति चला, उसका परिणाम हुआ कि भारत पाकिस्तान हो गया। हमारे करोड़ों लोगों को बेघर होकर यहाँ बंगाल में रिफ्यूजी बनकर आना पड़ा, और उसके लिए सीए पास कराना पड़ा। फिर एक बार उसी तरफ बंगाल जा रही है। सबसे ज्यादा टेररिस्ट एक्टिविटी, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का एक्टिविटी बंगाल में है। अब देश में कई बम बंदूक की आवाज नहीं है, बंगाल में हर जिला बम विस्फोट हो रही है, बंदूक की कारखाना मिल रही है, बम की कारखाना मिल रही है, हर जिला में उग्रवादी पकड़े जा रहे हैं, और सिमी, जमात, अलकायदा, जेएमबी के सारे मॉड्यूल्स यहाँ मौजूद हैं। और जानबूझ करके बांग्लादेश के साथ लगभग 1000 किलोमीटर सीमा का बाढ़ नहीं लगाया गया। ये सीपीएम ने भी किया, अभी टीएमसी ने की। माननीय होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह बार बार बोलने के बाद भी उन्होंने जमीन नहीं दिया। बाद में बोला आप ले लीजिए, हम जमीन नहीं देंगे, क्योंकि इससे उनको राजनीतिक फायदा है। मुस्तकिया आते हैं और रोहिंग्या आते हैं जिनको वोटर बना के वो वोट जीतते हैं, और इसलिए बंगाल बहुत बड़े खतरे के सामने है, साथ साथ देश भी खतरे के सामने है। ये जो 25 मिनट की राजनीति, इसके कारण देश का सुरक्षा खतरे में है। तो मुझे लगता है कि जब तक सरकार नहीं लेगी इसका परिवर्तन नहीं होगा। लोगों को पूरा मालूम है, लोग समय हुए हैं, एक बार फिर बंगाल को बांग्लादेश बनाने का जो साजिश हो रही है, उससे सचेत होकर लोग इधर वोट डालेंगे। अच्छा, आखिर में ये बताएं कि बीजेपी के वेस्ट बंगाल कैंपेन के बारे में कई लोग कहते हैं कि एक कमजोरी है कि कोई बड़ा चेहरा नहीं है दीदी के खिलाफ। ये सुनकर, क्योंकि 2014 से आप पार्टी में रहे, 15 से आप प्रेसिडेंट रहे, कभी कभी आपको थोड़ी इरिटेशन होती है कि लोग ये क्यों कहते हैं कि चेहरा नहीं है बीजेपी का पश्चिम बंगाल में? हम तो हैं, हम तो चेहरा ही है, हम तो यहाँ लड़ रहे हैं। हम किसी चेहरा का आधार पर चुनाव नहीं लड़ते हैं, हम विचारधारा, कार्य पद्धति, कार्यकर्ताओं का आधार पर लड़ते हैं, और जीतते भी हैं। आप देखे होंगे कई 5-10 साल में जो राज्य में हम जीते हैं, जब तक घोषणा नहीं हुआ मुख्यमंत्री का, उनको ज्यादातर लोग जानते भी नहीं थे। हमारे जैसे सामान्य कार्यकर्ता थे, लेकिन सामान्य कार्यकर्ता परिश्रम करके असामान्य रिजल्ट देते हैं, ये हमारी विशेषता है। और इसीलिए हम जो कलेक्टिव लीडरशिप पे विश्वास करते हैं, उसके आधार पर लड़ रहे हैं। लोग भाजपा को
मोदी जी का नेतृत्व को, हमारे उपलब्धि को विश्वास करते हैं और वोट डालते हैं। बंगाल में वही होगा। और इसीलिए जैसे कि बहुत सारे राज्य में, सभी राज्यों में बिना चेहरा घोषित किए हम चुनाव जीते हैं, बंगाल में ऐसे होगा। कुछ दिन पहले जब प्रधानमंत्री ने मंच से आपकी जमकर तारीफ की, उसके बाद बीजेपी और संघ के धड़े में काफ़ी धारणा तेज हो गई कि अगर बीजेपी की पश्चिम बंगाल में सरकार बनती है तो दिलीप घोष ही चीफ मिनिस्टर बनने के लिए फ्रंट रनर रहेंगे। देखिए, ये तो केंद्रीय नेतृत्व तय करते हैं, हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड है। सर्वोपरि हमारे जो विधायक जीत के आएंगे वो लोग अपना नेता तय करेंगे। मैं तो चुनाव में उतरा ही नहीं है, मैं सबको जिताने में लगा हूँ और इसीलिए इस विषय में मुझे बोलने का अधिकार भी नहीं है, ना हमारी ये परंपरा है पार्टी की। हम एक फौजी सिपाही है पार्टी के, एक सामान्य कार्यकर्ता। पार्टी ने मुझे थोड़ा सा बड़ा बना दिया, कभी अध्यक्ष बना दिया, फिर एमएलए बना दिया, फिर एमपी बना दिया। और मेरा सौभाग्य रहा कि मेरे जो लाखों कार्यकर्ता दिन रात परिश्रम कर रहे हैं, उनका प्रेम और विश्वास मुझे मिला है। मैं उनका साथ हमेशा दिया। तो आज जो पार्टी की जो सफलता है उसमें इसमें लाखों कार्यकर्ता का खून पसीना है, 137 लोगों की बलिदान है और इसके आधार पर मैं सामने हूँ नेता के रूप में। तो स्वाभाविक मेरा अगर प्रशंसा होता है, महान नेता मोदी जैसा नेता अगर प्रशंसा करते हैं, सच में मेरे लिए सौभाग्य की बात है। लेकिन बंगाल भाजपा जो आगे बढ़ रहा है और इसके लिए हमारे वरिष्ठ नेता बार बार बोले कि बंगाल के कार्यकर्ताओं ने बहुत बलिदान दिए हैं, तपस्या की है, ये सबका है उसमें। तो इस प्रकार प्रशंसा होने से क्या है, अपने और पार्टी के लिए काम करना और समय देना, परिश्रम करने का एक प्रेरणा मिलता है। और मुझे यही उपलब्धि हुई है कि हमारे कार्यकर्ता मेरे पर भरोसा किए, तो मुझे और भी ज्यादा कुछ देना पड़ेगा। जो काम बाकी है उसको पूरा करना पड़ेगा, हमारे कार्यकर्ताओं को साथ लेकर आगे बढ़ना पड़ेगा। चलिए, आप कैंपेन ट्रेल में हैं, कुछ वक्त आपने हमारे लिए निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। बीजेपी स्टेट यूनिट चीफ दिलीप घोष there joining us from Jungle Mahal. Within the BJP circles, the strong buzz is that he could be the man who will be the state's chief minister if the BJP comes to power. Thank you very much, Dilip Ghosh ji, for joining us. Let's move on to our next big story tonight. A bomb scare, the residence of India's richest man, is turned into a murky crime thriller that one might be watching on a streaming platform. Now, two new CCTV videos accessed by India Today reveal the direct link between suspended cop Sachin Vaze and Mansukh Hiren, whose car was found outside Antilla. Remember, Hiren was found dead a week after the bomb scare. Vaze had earlier denied any links with Hiren, but now his web of lies is unraveling. The biggest turning point in the Ambani bomb case probe. Tell-all CCTV footage establishing a link between main accused Sachin Vaze and murdered key witness Mansukh Hiren. India Today sets the news agenda with this big news break with two sets of CCTV images. In the first set of exclusive CCTV footage, the victim Mansukh Hiren can be seen alighting from a white cab at the Chhatrapati Shivaji Terminus station on the 17th of February. He waits before crossing the busy intersection. The second set of exclusive CCTV images shows a blue-colored Mercedes driven by Sachin Vaze himself. The Mercedes stops at the signal and remains stationary even when the lights turn green. Mansukh Hiren is seen walking across the road and getting into the waiting Mercedes, which then drives off with Sachin Vaze at the wheel. India Today scoops out evidence which may prove a watershed moment in Antilla bomb scare case. It proves that how Sachin Vaze lied. Sachin Vaze knew Mansukh Hiren. This footage nails Sachin Vaze's lies. It actually cracked the whole Antilla bomb scare case. The second video where Vaze and Hiren were caught together is from February the 26th, a day after explosives were found in an SUV outside Ambani's residence Antilla. Vaze and Mansukh Hiren are seen driving together in another luxury vehicle and getting down. Not just that, India Today earlier showed how Sachin Vaze was seen driving the getaway white Innova car used by the Antilla bomb planter.
The vehicle reached a spot nearby to Antilia, Mukesh Ambani's residence, on the 24th of February at 4:35 a.m. when Sachin Vaze, in a loose overall, got down to plant the threat letter addressed to the Ambanis in the gelatin stick-laden black Scorpio. The National Investigation Agency got the lead from these CCTV images from Mulund Toll Plaza, where the Innova was caught on CCTV the same night at 5:18 a.m. These images nail the disgraced police officer and give clinching evidence of his direct role. Bust his chief lies of never having known Mansukh Hiren and having no role in the Antilia bomb plot. With Sahil Joshi and team in Mumbai, Bureau Report, India Today. While Sachin Vaze has been remanded to 10 days NIA custody in the Antilla scare probe, the Maharashtra ATS has named him the key conspirator in the murder of Mansukh Hiren. Sources say Vaze's aides allegedly sedated the Thane businessman with chloroform and then smothered him to death. A murder mystery, a threat to India's richest man, dirty cops. Here is one more to the long series of twists and turns in the Ambani bomb scare case. The Maharashtra Anti-Terror Squad now suspects Sachin Vaze was present when Mansukh Hiren, the witness in the explosives case, was murdered. According to ATS sources, Vaze's aides allegedly sedated the Thane businessman with chloroform and then smothered him. Sources say an analysis of mobile tower and IP data suggests Vaze's presence in the vehicle when Mansukh Hiren was killed at the crime spot. The suspended assistant police inspector's vehicles are being scanned by forensic experts. The handkerchiefs which were found stuffed inside Hiren's mouth when his body was recovered, ATS sources say, could have been used to administer chloroform to immobilize him before the murder. Mansukh Hiren's post-mortem report suggests injury marks on his face and neck, which may have been caused when he fought the suspects before being sedated. It has come to light in the Mansukh Hiren case that it's suspicious Sachin Vaze was present at the time when Mansukh Hiren was murdered in Thane. But Sachin Vaze played it smart. He was using different SIM cards. He had kept his phone at CIU office. After the entire incident on 4th of March at night, 10:30, he came to CIO office, and from there he led a raiding team at Tipsy Bar, Dongri, where we are standing right now. This raid was done just to camouflage the presence of Sachin Vaze in Mumbai, but the fact remains that the suspicion of agency is that Sachin Vaze was very much in Thane when the entire incident took place. He must have called Mansukh Hiren down, but to make sure that the suspicion prima facie is not on him, he left his mobile phone at his office and raided this place to establish his presence in Mumbai. Anti-terror squad sources say Sachin Vaze left his office at 7 p.m. and around 8:30 p.m. reached Thane and called Mansukh Hiren. They claim that after Hiren's murder, his body was thrown in the creek and the killers switched on his phone for a few minutes near Vasai to misguide the investigation. As Vaze feared that Mansukh Hiren will spill the beans on entire Antilla bomb scare case, he planned another conspiracy to get rid of him. But the digital trail left behind by him and the co-accused gave ATS a breakthrough in this case. With camera person Mangesh Amre, Mustafa Sheikh in Mumbai for India Today. In a massively explosive turn of events in the Ambani bomb scare case, which has jolted the Mumbai police, India Today has now learned that a mystery woman had also checked into a 5-star hotel in Mumbai where arrested cop Sachin Vaze was lodged from the 16th of February to the 20th. The NIA is trying to ascertain the details of this mystery woman. Who is she? What was she doing there? India Today's Mumbai Bureau pieces together this puzzle. A bomb scare targeting India's richest man. A suspended encounter specialist arrested for murdering a businessman. A sea-facing 5-star hotel in the poshest area of Mumbai. Bags full of cash and a mystery woman. Every new day begins with a new twist in the high-profile Ambani bomb scare case.
twists enough to be turned into a blockbuster film or a binge-worthy series. The National Investigation Agency is grilling former encounter specialist Sachin Vaze, but the cop refuses to blink, leaving some glaring questions. Who is the mystery woman spotted at the five-star hotel? Why was the woman carrying a machine meant for counting notes? What's the secret of 5 black bags being carried to the hotel? Why was the hotel room booked for a period of 100 days? Why did Sachin Vaze fake his identity to stay in room number 1964? Sources in the NIA have told India Today that Sachin Vaze is playing mind games with the interrogators. This despite the fact that probe agency has managed to recover Vaze's fake Aadhaar card used to check in at the hotel. Why was Sachin Vaze staying in a 5-star hotel in Mumbai from 16th to 20th February, close to the incident of the gelatin sticks found outside Antilla? CCTV footage of this hotel has been seized by NIA. In the CCTV footage, Sachin Vaze is seen. There's a woman for whom the NIA is looking for. She has a cash counting machine in her hand. There were 2 cash counting machines which were seized earlier from a Mercedes car which was used by Sachin Vaze. So was that the same machine, and why this was happening? Was there a cash dealing happening? There are also news of a jeweler who was under investigation by Mumbai police booking these rooms for 100 days for Sachin Vaze. To simplify the case, we tell you the inside details that uncover the Sachin Vaze, the Trident Hotel's room number 1964 link. Days before the gelatin-laden Scorpio was found near Antilla, Vaze was spotted with the woman at the 5-star hotel Trident on February 16th. CCTV footage has found that the woman wearing a mask had entered the hotel with the machine used to count currency notes. The NIA is going through at least 35 cameras across the hotel to verify her identity. Although Vaze has refused to identify the woman, the sleuths have stumbled upon clinching evidence to nail the disgraced cop. So the question arises, was Sachin Vaze handling a crucial case related to dark deals in the Maximum City? Was several women being grilled in connection with the case? Was the woman spotted with Vaze linked to that case? But why is the identity of this mystery woman so important? It is believed that the woman knows the secret behind the 5 black bags found from Vaze's possession. The concerned woman will answer the mystery around the counting machine. The CCTV footage shows that the mystery woman knew Vaze very well. She was spotted with him in the cop's car and then inside the hotel on February 16th. With Divyesh Singh and Mustafa Sheikh in Mumbai, Bureau Report, India Today. The NIA is probing arrested cop Sachin Vaze's stay at a 5-star hotel in South Bombay. NIA grilled Vaze on the content of the 5 bags he carried with him while entering the hotel during his stay between the 16th of February and the 20th. In another explosive lead, Vaze's luxury stay was allegedly funded by a businessman and he'd used a fake Aadhaar card to enter the hotel. Here's a detailed report. Sachin Vaze, one man the NIA is hoping will spill the beans. This is the black Mercedes that Vaze used to drive before he got arrested. It's the same car from which NIA recovered 5 lakh rupees in cash and a note counting machine. And this is where the mystery deepens. Is this the same note counting machine that was carried by the woman spotted at the Trident Hotel with Vaze? Was the 5 lakh recovered by Vaze's Mercedes just a small fraction of the money carried in black bags? The NIA team is now trying to connect these dots. But here's what we know. Revelation 1. A businessman booked a hotel room at the Trident. Revelation 2. Room number 1964 was booked for 100 days. Revelation 3. The businessman handed over the money to Vaze at the hotel. Revelation 4. The hotel room cost rupees 15,000 per day. Revelation 5. Vaze allegedly signed a secret deal in room number 1964. NIA has identified the businessman who booked the 5-star hotel room for Vaze. Sources say Vaze used to stay in room number 1964, but the bill was paid by a travel company. NIA could soon be questioning the owner of this travel firm. The black bag could contain the amount from the secret dealings.
NIA has so far questioned the staff of the 5-star hotel. What did the hotel staff see when the bag was scanned? Did the hotel staff know what was inside the bag? NIA has an image of the black bag, retrieved from the hotel's CCTV footage. NIA raided Vaze's home, but the investigation team believes that he had hidden the bag. With Divya Singh in Mumbai, Bureau Report, India Today. It started with a suspicious Scorpio filled with explosive gelatin sticks. Next, a mysterious Mercedes emerged. The owner of one of those cars has been found dead. The other remains clueless about the terrifying path this story has taken. Here's our report. While the NIA was still piecing together the puzzle of the two vehicles, a third vehicle has added a fresh twist. A Mercedes with lakhs in cash, cans of diesel and petrol, and a note counting machine has put the officials in a tizzy. And what's more concerning is that the same vehicle was parked inside the police headquarters in the parking lot of the Crime Branch office where Sachin Vaze was working. Late on Monday night, the NIA team reached the Crime Branch CIU unit's office at the Mumbai Police Headquarters, where Sachin Vaze and his team operates from. The NIA team searched the entire office. A DVR was recovered that had pictures of the complex of Sachin Vaze's house in Thane. When the NIA team exited the office, it suddenly caught sight of this black Mercedes. During interrogation, it was found that this Mercedes had been parked there for days. But the real shocker was that it belonged to Sachin Vaze. The team immediately decided to search the Mercedes and found the number plate of the very Scorpio that was parked outside Antilia with explosives. Not only that, there were other number plates inside the car as well. The thing that surprised NIA officials the most was the note counting machine it recovered from the car. Now the question is, why was there a note counting machine inside the Mercedes? Whose money was it? Whose machine was it? And the biggest question is that in addition to the recovered 6 lakh rupees, was more money kept inside the Mercedes, where they counted and divided? If yes, among who? Is there a connection to the Antilia case? NIA ने आज एक ब्लैक कलर की मर्सिडीज बेंज को सीज किया है, जिस ईदर में जो स्कॉर्पियो पे नंबर प्लेट थी उसको रिकवर किया है। 5 लाख से ज़्यादा कैश रिकवर किया है, एक नोट काउंटिंग मशीन रिकवर की है, कुछ कपड़े रिकवर किए हैं। ये गाड़ी सचिन वाजे चलाते थे। ये किसकी गाड़ी है, इसके बारे में अभी जांच चल रही है। The owner of this Mercedes is a resident of Dhule city in Maharashtra. The NIA is investigating the link between the Mercedes owner and Sachin Vaze. India Today's team tracked down the Mercedes owner, who claimed that he had sold his car back in February. गाड़ी मेरी अभी है नहीं, गाड़ी मेरी थी और ये गाड़ी मैंने मिडल ऑफ फरवरी 2021 में ऑलरेडी को सेल आउट कर दी थी। तो इस सब मैटर में मेरा कोई रोल है नहीं सर। जो एक गाड़ी बेचते समय जो कुछ प्रोसेस होती है वो सारी मेरे पास है, वो सारे डॉक्यूमेंटेशन मेरे है। Apart from the car, NIA has seized 3 items from Sachin Vaze's office: DVR, iPads and mobile phones. This is the same DVR which was taken by the Crime Branch CIU team from Vaze's housing complex on the 27th of February. According to the NIA, this DVR is the most important evidence in this case. NIA believes
The Scorpio used in the Antilia case was parked in Sachin Vaze's house, Saket housing complex, from February 17th to 25th. According to NIA sources, the DVR has been tampered with. The DVR has been sent for forensic investigation. According to the NIA investigation, Mansukh Hiren's car was not stolen, but it was part of a bigger plan. Under the same plan, Mansukh Hiren reached the Eastern Express Highway at around 6 p.m. on February 17th and parked his car on the roadside. The car was parked in a place where there were no CCTV cameras. According to NIA sources, after parking the vehicle, Mansukh Hiren gave the key to a policeman of Crime Intelligence Unit. He then took a cab and proceeded to Mumbai. Later, the same policeman took the car and parked it at Sachin Vaze's house. Apart from Vaze, only 3 to 4 policemen of the CIU unit were aware of the exact location of the Scorpio between 17th and 25th February. One of them is Riaz Qazi. Assistant Police Inspector Riaz Qazi is also the person in the Crime Branch CIU who took the DVR with CCTV footage from Sachin Vaze's house during the investigation. NIA has been grilling Riaz Qazi. Sources say NIA is also interrogating people associated with Mansukh Hiren to unlock the mystery of the Scorpio that was found outside the house of India's richest man. With Mustafa Sheikh and Saurabh Bakhtania. Bureau Report, India Today.